Hi everyone. So we are back again and live again with the second part of the Plant Kingdom and with our Incept batch. Sorry for a little delay. There was some, communications being going on. So basically, thoda sa kuch disruption tha, network issue tha, and because of that only the things got delayed a little bit. But we are going to again start up with the fresh things. एंड जैसे कि आपको मालूम है कि ये हमारा इंसेप्ट बैच है और राइट मेटा एकेडमी में विच इज बीइंग गोइंग ऑन सो इन दिस पार्ट So in this part, we are basically going to deal and talk about the, we are going to talk about the next part of the plant kingdom, and that is going to be the Bryophyte section. The Bryophyte section के बारे में हम बात करेंगे, and we will be discussing things about that part. ब्रायोफाइट्स में एल्गी का पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था, एंड हम लोगों ने ऑलरेडी classification systems and classification types ये सारी चीजें already देख ली थी. So today we are going to deal with a very fresh new topic of the plant kingdom, and that is going to be the Bryophytes part. तो आगे बढ़ते हैं with this part of the Bryophyte section. So basically the important thing to note in this part is that कि हम Bryophytes जो होंगे ना, Bryophytes is a higher category of the plant kingdom जब हम उसकी बात करते हैं, ठीक है. और इसमें जो important चीज है नोट करने वाली वो basically ये हो जाएगी that Bryophytes में जो कैटेगरीज आएगा, जो प्लांट कैटेगरीज आएगा जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे ना, दोज आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम. एंड सिंस दे आर कॉल्ड एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, तो उसमें हम ये भी देखेंगे कि व्हाई दे आर एक्चुअली कॉल्ड टू बी एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम. ऑलराइट, एंड दे हैव सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स व्हिच आर डिफरेंट from the normal plants, or which are actually different from the algae. Actually, with this we will be talking about it. So let's take a look into that part. Let me just refresh this page a little bit. Just a moment. All right. So okay, now so basically हमारा जो Bryophytes होता है, तो let me just maximize this part a little bit. Now this is the portion. So जब तक ये स्ट्रीम करा, we can just discuss a few things about Bryophytes. तो जब हम Bryophytes की बात करते हैं, तो Bryophytes are basically considered to be, or they are basically called as to be the plant body. जैसे कि मैंने आपको बोला कि they are considered to include the amphibians of the plant kingdom. तो इसको हम Bryophytes, they are called as amphibians of the plant kingdom. Amphibians of plant kingdom. Clear? So इनको हम amphibians of the plant kingdom क्यों consider करते हैं? So they are called as the amphibians of the plant kingdom because though they live in soil, but they actually require water for carrying out the sexual reproduction process, है ना? तो amphibians इसलिए बोला जाता है because though they live in soil, इनका सर्वाइवल जो फैक्टर होता है वो सॉइल में ही रहता है. सो दो दे लिव इन सॉइल, ऑलराइट, बट requires water, but they actually require water for carrying out the sexual reproduction process. So for carrying out
sexual reproduction. So this will be the case. ठीक है? So that's why they have been specifically given name that they are called as amphibians. Amphibians में animals में अगर आप ध्यान से देखो तो animals के जो amphibians category होते हैं उनके साथ जो important feature आ जाता है वो basically यही होता है that वो land and water दोनों में survive करते हैं. Since they survive both in land as well as in water, so that's why इनको amphibians consider किया जाता है. Now bryophytes में जो main दो important categories included है, clear? So those are basically called as mosses and the liverworts that are actually found commonly in the moist shaded areas and that too in the hills. इनका जब हम habitat, ये basically ये जो indicate कर रहा है, this is basically indicating their habitat part. कि इनका जो habitat होता है वो basically moist and shady places में होता है, moist and you know ऐसे places जिसमें कि बहुत ज़्यादा sunlight भी नहीं पहुंचना है and हल्का सा moistness भी उसमें रहती है. That is the case. So इनके basically होते तो basically इनके 3 categories हैं, but in your course there are 2 categories that are included. So one is called as the liverworts. Clear? तो इनको liverworts भी बोला जाता है, and the other category that is included are called as the mosses. So liverworts जो होते हैं they are also known as Hepaticopsida. तो इनको हम Hepaticopsida भी कंसिडर करते हैं और Hepaticea बोलते हैं, family is called Hepaticea and scientific name मैं बता रही हूँ, and mosses they are called as Bryopsida. So they are called Bryopsida. So basically these two are the classes of the bryophytes that we will be talking about. ठीक है, तो ये फिगर के बारे में भी हम देखेंगे कि इनका कैसा कैरेक्टराइजेशन होता है, कैसा फीचर होता है. दिस वी विल आल्सो बी टॉकिंग अबाउट इट इन अ वेरी few minutes. अब आगे हम देखते हैं. ठीक है ना. Bryophytes का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया that they are called amphibians of the plant kingdom because though these plants they live in soil but are actually dependent on water for carrying out the sexual reproduction process. तो ये रहते हैं soil में but they live in water for carrying out the process of sexual reproduction. Why? क्यों ऐसा है वो भी मैं आपको reason बताऊंगी. Now habitat mostly क्या हो जाएगा इनका? If I can just maximize this part a little bit like this. This part. Clear? So habitat जो होता है इनका वो usually damp places का हो जाएगा. So they occur in damp places, humid and shaded localities में मिलेंगे, and they play a very important role in the plant succession or bare areas. ऐसा reason इसलिए होता है क्योंकि bryophytes जो होते हैं ना वो acidic substances को release करते हैं. So these bryophytes since they are responsible for releasing the acidic substances. So bryophytes releases acids and उसमें भी जो specifically जो bryophyte जो ये release करेगा acid को, that is particularly the mosses. Mosses categories जो होते हैं वो primarily acids को release करते हैं and these acids they are going to solubilize the rock. जब ये rocks को solubilize करते हैं, this is solubilize. This is going to solubilize rocks and once these are going to solubilize the rocks, clear, तो इससे क्या होगा, इससे जो भी nutrients जो soil में present होंगे they are going to actually dissolve in the rock. तो basically all together कहने का मतलब ये हो जाएगा कि bryophytes releases acid that solubilizes rock and the nutrients that are present inside the rocks or minerals, not nutrients we can say, but more specifically we can say as minerals. So minerals that are found in rocks that are going to dissolve with soil. So minerals dissolves with soil. This is going to dissolve with the soil component and then ultimately it is going to give rise to new plants. So this is how the process of ecological succession starting from year to year take place. So this all indicates the process of ecological succession. तो ये पार्ट हो जाएगा. क्लियर. नाउ ये वाला पार्ट हो जाएगा. नाउ ब्रायोफाइट्स जो होते हैं इनकी जो प्लांट बॉडी होती है ना ब्रायोफाइट्स की, इट इज मोर और लेस मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ द एलगी. मैंने आपको ऑलरेडी बोला
कि एलिगी से थोड़ा सा ज्यादा जो कैरेक्टराइजेशन हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा जो स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, वो ब्रायोफाइट्स के प्लांट बॉडी का होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनकी प्लांट बॉडी थैलॉइड टाइप तो नहीं होती, बट इनकी प्लांट बॉडी दे हैव द प्रेजेंस ऑफ स्लाइट इनमें रूट लाइक और स्टेम लाइक या लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स यूजुअली इसमें मिलते हैं। ठीक है, सो दिस इज थैलस लाइक बट नॉट थैलस एग्जैक्टली, and they can be either prostrate or erect, and it is attached to substratum by the means of unicellular or multicellular rhizoids इसमें मिलेगा। मतलब अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे ना तो this something looks like this, जैसे ये कुछ ऐसा है, and it has the presence of rhizoid like structures over here then here, और यहाँ से फिर ultimately structures जो है वो emerged out हुए। It can be entheridiophore or archigoniophore having small leaf-like structures. छोटे छोटे leaf-like structures इसमें मिल सकते हैं। So that is how we will be also seeing the thallus of the mercantia, तो उसमें आपको एक idea मिलेगा। However, इनमें आपको true roots नहीं मिलेंगे, true stem नहीं मिलेगा, true leaves नहीं मिलता है। तो true root stems and leaves की जरूरत भी नहीं है। They lack true root stems and leaf, क्यों? Because ये already water में रहते हैं। So whatever the nutrition they have to get it, they will get directly from the water. Water से इनको direct मिलेगा, तो किसी भी तरीके का इनको vascular system की जरूरत नहीं है। So that's why bryophytes have another feature, and that is that they lack vascular system, or they actually lack any vascular tissues. वैस्कुलर टिश्यूज मतलब क्या टिश्यूज हो जाएगा? वैस्कुलर टिश्यूज का मतलब हो जाएगा कि एनी काइंड ऑफ कंडक्टिव टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यूज का मतलब हो जाएगा कि जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम इनमें नहीं होता। व्हाई? सिंस दे आर ऑलरेडी इन वाटर, तो क्योंकि ये पानी में ऑलरेडी रहते हैं, फॉर दैट रीजन दे डू नॉट रिक्वायर एनी कंडक्टिव टिश्यू। कंडक्टिव टिश्यूज की जरूरत लैंड प्लांट्स को होती है, दैट्स व्हाई। ठीक है, so they may possess root-like, stem-like or leaf-like structures. The main plant body of bryophyte is considered to be a haploid plant body which produces the gametes. अब इसमें मैं आपको एक साइकिल बनाऊंगी, we will be explaining a simple cycle over here so that आपका पूरा का पूरा जो bryophyte का लाइफ साइकिल होगा that will be ultimately covered up. ठीक है, so this will be the case. So एक चीज जो हम यहाँ पे देखेंगे वो ये कि जो मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट की, ठीक है, मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट के केस में हो जाएगा गैमेटोफाइट। व्हाई गैमेटोफाइट? बिकॉज गैमेटोफाइट इज द गैमेट्स प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी। ठीक है, तो इट कैन स्टार्ट विद गैमेटोफाइट। हम गैमेटोफाइट से शुरू कर सकते हैं यहाँ पे। गैमेटोफाइट क्योंकि गैमेट प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी होता है ना, तो ये सेक्स ऑर्गन्स को बेयर करेगा। ठीक है, एंड दिस गैमेटोफाइट दिस इज ऑलरेडी हैप्लॉइड। ठीक, ये जो गैमेटोफाइट होगा ये सेक्स ऑर्गन्स को बेयर करेगा, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। सो दिस बेयर्स द मेल सेक्स ऑर्गन। क्लियर? क्योंकि गैमेट्स अगर बनेंगे तो ऑर्गन्स में ही बनेंगे, सेक्स ऑर्गन्स में ही बनेंगे, फॉर दैट रीजन। एंड दिस हियर इज गोइंग टू बी द फीमेल सेक्स ऑर्गन। दिस विल बी द केस। ठीक है, नाउ दिस मेल सेक्स ऑर्गन इज नोन by a name which is called as entheridium. जो मेल सेक्स ऑर्गन का नाम होता है उसको हम क्या बोलेंगे? एंथेरिडियम बोलेंगे। और ये जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, दिस इज नोन बाय अ नेम विच इज कॉल्ड एज आर्चिगोनियम। इसको हम आर्चिगोनियम बोलेंगे। ठीक है, एंथेरिडियम का आप शेप देखोगे ना, तो एंथेरिडियम का शेप समथिंग लाइक दिस होता है, रैकेट शेप का होता है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, एंड दिस गोज लाइक this. That means each and every cell of the entheridium is going to give rise to new, that means new gamete. ऐसा रहता है, तो इसी से हमारा गैमेट बनता है। एंड आर्चिगोनियम का आप स्ट्रक्चर देखोगे तो आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर इट्स समवट लाइक फ्लास्क शेप्ड, बिल्कुल ऐसा रहता है, having a bearing a single egg like this. तो इसमें आपका egg हो जाएगा here. This will be the case. ठीक है, we can shift the figure over here. ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा। तो आर्चिगोनियम एग को बेयर करता है, एंड एंथेरिडियम ये सेक्स ऑर्गन की मैंने बात की, जो एंथेरिडियम जो हो जाएगा वो मेल सेक्स ऑर्गन हो जाएगा। नाउ दिस मेल सेक्स ऑर्गन विल बी बेयरिंग द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स। ठीक है,
तो ये जो सेक्स ऑर्गन्स होंगे वो अल्टीमेटली मेल एंड फीमेल गैमेट्स को बेयर करेंगे. सो दिस बेयर्स male gamete, and that male gamete has been given a name which is known as which is called as entherozoid, जिसको हम entherozoid बोलेंगे. Yeah. Now what does entherozoid looks like? तो इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो ये कुछ ऐसा रहता है, बाइफ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर रहता है. तो ये केस हो जाएगा. ठीक है ना. आर्चिगोनिया में ऑलरेडी मैंने आपको एग बता दिया है, जो कि which will look like this, single egg like structure होता है. This is going to be like this. ठीक है. तो ये जो entherozoid होता है ना, since this is flagellated, ये entherozoids, these are motile ना, these are motile structures. Why they are motile? Because they are having the presence of flagella. So since they are having the presence of flagella, तो ये move करके ultimately egg के पास जाएगा. Here, clear? तो ऑटोमेटिकली हम बोल सकते हैं कि मूवमेंट जो होगा दोनों के फ्यूजन से, इसका और इसका, इन दोनों के फ्यूजन से जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा, दैट विल बी अल्टीमेटली कॉल्ड एज द फ्यूजन प्रोडक्ट व्हिच इज कॉल्ड zygote. तो इनके फ्यूजन से प्रोडक्ट जो बनेगा, दैट विल बी कॉल्ड zygote. दिस इज एग व्हिच इज हैप्लॉइड. क्लियर? एंड एंथेरोजॉइड जो होता है वो भी हैप्लॉइड हो जाएगा, क्योंकि हमारा गैमेटोफाइट ही हैप्लॉइड है. सो इफ द गैमेटोफाइट इज हैप्लॉइड, सो द सेक्स ऑर्गन हियर विल आल्सो बी हैप्लॉइड. सेक्स ऑर्गन्स भी हैप्लॉइड होंगे, मतलब ये भी हैप्लॉइड हो जाएगा, एंथीरिडियम एंड आर्चिगोनियम. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज गोइंग टू बेयर द मेल एंड द फीमेल गैमेट. इस तरीके का होगा. फ्यूजन से ये जाइगोट बनाएगा व्हिच इज कॉल्ड एज डिप्लॉइड प्रोडक्ट व्हिच इज 2n हो जाएगा. ठीक है. नाउ दिस जाइगोट will, without undergoing any kind of reduction division, this is going to give rise to the main to the secondary plant body in case of bryophyte, which is called sporophyte. So this give rise to, in fact this germinates to give rise to sporophyte. This is going to germinate to give rise to sporophyte like this. Clear? तो ये सीन हो जाएगा. अब ये जो स्पोरोफाइट होता है, क्योंकि ये डिप्लॉइड प्लांट बॉडी है, क्योंकि ये जाइगोट से बना है, तो दैट विल बी डिप्लॉइड. नाउ दिस, एंड सिंस वी हैव टू कंप्लीट दिस एंटायर साइकिल. ठीक है. तो ये जो स्पोरोफाइट होता है, दिस स्पोरोफाइट विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. दिस विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मियोसिस व्हिच इज अ काइंड ऑफ अ रिडक्शन डिवीजन. तो इसमें जब मियोसिस होगा तो ये अल्टीमेटली जो स्ट्रक्चर बनाएगा which are called haploid spores, है ना. ये अल्टीमेटली हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएगा, छोटे छोटे इंडिविजुअल स्पोर्स ये बनाएगा. ठीक है. एंड ऑल दोज हैप्लॉइड स्पोर्स will ultimately germinate to give rise to the main plant body which is called gametophyte. So germinates to give rise. So this is going to germinate to give rise to gametophyte. And that's how the life cycle of this entire bryophyte gets completed. इसी तरीके से ये पूरा का पूरा जो लाइफ साइकिल होता है ना, वो कंप्लीट होता है. तो इससे हमें क्या पता चला कि हाफ मोस्ट डोमिनेटिंग जो आपका समझ लीजिए जो फेज तक आ जाएगा, जैसे मतलब यहां से यहां तक का अगर हम कंसिडर करेंगे, दिस मीन्स फ्रॉम हियर यहां से अगर हम ऐसे कंसिडर करें, एंड दैट टू दिस इज गोइंग टू go till here, यहाँ तक. तो ये हमारा हैप्लॉइड फेज को इंडिकेट करेगा, जो कि मेन डोमिनेटिंग फेज में आ जाएगा. क्लियर? और ये वाला फेज जो हो जाए ये हमारे डिप्लॉइड फेज को इंडिकेट करेगा. व्हाई डिप्लॉइड फेज? क्योंकि स्पोरोफाइट इसी में बन रहा है हमारा. सो दिस इज गोइंग टू इंडिकेट द डिप्लॉइड फेज, हैप्लॉइड फेज and then diploid phase like this. Clear? So this is the case. तो वही सारी चीजें यहाँ पे मेंशन, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया है, और मैंने यहाँ पे पूरा लाइफ साइकिल जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर दिया. ठीक है. तो ये चीज हो जाएगा. Now this is basically, यहाँ पे आप देखेंगे कि this is going to produce ये
The main plant body, we were at this point that the main plant body of the bryophyte is haploid, which is this one, gametophyte. So this is going to produce gamete. Hence it is called gametophyte. जैसे कि मैंने आपको already बोला कि क्योंकि ये gametes produce करते हैं इसलिए gametophyte बोला जाता है. The sex organs in bryophyte, they are multicellular. The male sex organ is called as the entheridium, and the female sex organ is called as the archegonium. एंथेरिडियम जो होता है वो बाइफ्लैजेलेट एंथेरोजॉइड्स को प्रोड्यूस किया, जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है. While the female organ, which is archegonium, ये flask shaped होगा, and this is going to produce a single egg. Now entherozoids, they are released into water where they are going to come in contact. ये फ्यूजन जो होगा, ये फ्यूजन तभी हो पाएगा जब एंथेरोजॉइड रीच आउट करेगा एग के पास, क्योंकि वो मोटाइल है. एंथेरोजॉइड मोटाइल है, एग मोटाइल नहीं है. सो दैट इज द केस. तो ये जो एंथेरोजॉइड्स होते हैं, दे आर रिलीज्ड इनटू वाटर वेयर दे विल कम इन कांटेक्ट विद द आर्चिगोनियम, and entherozoid is going to fuse with the egg of the archegonium to produce the zygote, which is this one, this product. ठीक. zygote जो होगा, जैसे अगर बनेगा ना, तो zygote तुरंत reduction division नहीं जाता है. It doesn't undergo reduction division immediately. Rather, it produces a multicellular body which is called sporophyte. This one. ये multicellular body बनाएगा जिसको हम sporophyte consider करेंगे. Now this sporophyte is not free living, but it is attached to the photosynthetic gametophyte and is going to derive nourishment from it. मतलब ये जो sporophyte होता है, this sporophyte is not the main plant body, क्योंकि main plant body तो है नहीं. So that's why this sporophyte is actually dependent upon the gametophyte for deriving nourishment and nutrition from it. Some cells of the sporophyte, they will undergo reduction division. That means meiosis, जो कि यहाँ पे मैंने आपको mention already किया हुआ है, to produce the haploid spores like this. Haploid spores बनाएगा और वो spores ultimately germinate करके क्या बनाते हैं, gametophyte बनाएंगे. ठीक है. So this is about the life cycle of the bryophyte that we have seen. Clear? Now आगे बढ़ते हैं. Now let us just look into the economic importance of bryophyte. Economic importance की जब हम बात करते हैं, तो bryophytes जो होते हैं, bryophytes they play a very important role in in the economic importance, because they provide these bryophytes में भी जो specifically mosses होते हैं ना, they are going to provide food for the herbaceous mammals, birds and other animals. ठीक है. तो ये food का भी source होते हैं. Species of sphagnum जो होते हैं, which is called as, ये जो sphagnum होता है ना, sphagnum is basically a moss. ठीक है. Sphagnum is a moss category of bryophyte and this is called as peat moss. And peat is a kind of a coal, if you people remember. Geography में हम पढ़ते हैं ना, तो peat जो होता है, कई तरीके के coals होते हैं, तो in which peat is one of the categories. So that's why it is called as peat moss. Clear? So that is going to provide peat that has long been used as fuel. तो इनको ultimately fuel की तरह use किया जाता है. So that will be the case. And these species of sphagnum, ये जो sphagnum के species होते हैं ना, they are also used as packing material. So they are also used as packing material. Why? Because they have a very good amount of absorbing the water. They can absorb water in their cells. Along with that part, they are going to they actually act in wrapping of the materials around around themselves. कोई भी जो living material होता है उसको हम wrap कर सकते हैं around these sphagnum, and they are going to absorb water and make the living materials to be like living for a longer period of duration or time. तो वो ट्रांसशिपमेंट में हेल्प करता है. कहने का मतलब सिंपल में ये हो जाएगा. So they act as a packing material and for the transshipment of the living material because of their capacity to hold water. ठीक है. Mosses और lichens ये दोनों जब मिल जाते हैं, then these organisms they first colonize the rocks and hence they are of great ecological importance. क्योंकि मैंने आपको already बताया था कि mosses along with lichen, if we are going to consider, ठीक है. So mosses along with lichen, they are going to act as, or it is actually going to help in ecological succession process. So this is basically
helps in ecological succession. ऐसा हो जाए, ठीक है, क्योंकि वही जो मैंने आपको बताया था कि दे रिलीजेस एसिड व्हिच इज गोइंग टू डिसॉल्व द रॉक, एंड जो भी रॉक के मिनरल्स होंगे वो पूरा का पूरा सॉइल में मिलेगा, एंड अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू गिव राइज टू न्यू प्लांट. तो वो चीज हो जाएगी, ठीक है. Now they decompose rocks, making the substrate suitable for the growth of the higher plants. Now since mosses they also form dense mat on the soil, dense mat भी बनाते हैं, so that's why they reduce the impact of falling rain and thereby preventing the process of soil erosion. तो soil erosion को basically क्या करते हैं, prevent करेंगे. So the bryophytes, they are primarily divided into two categories. So this was about the general features of bryophyte. Now let us take a look into the categories of bryophyte. All right, so that is liverwort and mosses. liverworts की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो liverworts में सबसे पहले let us just look into the figure. यहाँ पे मैं आपको पहले फिगर दिखा देती हूँ कि कैसा दिखता है, and then we can just maximize this part like this. Yeah. Now ये जो आपको दो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन ओवर हियर, ये दोनों के दोनों लिवरवर्ट के ही कैटेगरी है, दोनों के दोनों लिवरवर्ट में ही आते हैं, लिवरवर्ट के थैलस हैं, एंड दैट टू दे बिलोंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी व्हिच इज कॉल्ड मर्कैंशिया, जिसको मर्कैंशिया बोलते हैं. नाउ दीज लिवरवर्ट, ये जो लिवरवर्ट बेसिकली होता है, इसमें आप देख सकते हैं कि इनका भी स्ट्रक्चर कुछ थैलस लाइक ही है. दे आल्सो हैव द प्रेजेंस ऑफ राइजॉइड, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव अ वेरी यूनिक स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड गैमा कप, जिसको हम गैमा कप बोलेंगे, ठीक है. सो दे हैव अ वेरी यूनिक स्ट्रक्चर. ये जो गैमा कप होते हैं, गैमा कप, these are asexual green multicellular reproductive bodies. That means green multicellular asexual reproductive bodies are there, जिनके अंदर में ना क्लोरोप्लास्ट होता है. That's why they are green in color. And once they are detached, ये basically vegetative reproduction या asexual reproduction में बहुत important role play करते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ मर्कैंशिया में मिलते हैं, ठीक है. तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो गैमा कप होता है, this gamma cup is very very important for the purpose of asexual reproduction. Once these gamma cup they are detached from the parent body or from the plant body, so that is going to give rise to a new thallus, ठीक है. तो यह मर्कैंशिया का. तो यहाँ पे आप आर्चिगोनियोफोर देख सकते हैं और एंथेरिडियोफोर देख सकते हैं. आर्चिगोनियोफोर अगर होगा मर्कैंशिया के थैलस में, so this will indicate the female thallus. This basically indicates female thallus or a female plant body, and this indicates the male thallus. This basically indicates male thallus containing the archigoniophore, ठीक है. तो ये वाला पार्ट हो जाएगा. तो इसमें वही चीज हम लोगों ने देखा था. Let us just now look into the content part. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिवरवर्ट्स का भी जो बेसिक फीचर हो जाएगा वो यही हो जाएगा, that they grow usually in moist shady habitat such as banks of streams, marshy ground, damp soil, bark of trees and deep in the woods. Now the plant body of liverwort is basically considered to be thalloid, जैसे कि एग्जाम्पल में मर्कैंशिया हो जाएगा, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था. Now the thallus is usually considered to be dorsiventral. Dorsiventral मतलब क्या? Dorsiventral thallus का मतलब हो जाएगा that having a dorsal and a ventral surface. दो surface हो जाएंगे dorsiventral thallus में. Dorsal surface
और वेंट्रल सरफेस। डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस। तो डॉर्सल सरफेस जो होता है वो अपर सरफेस को इंडिकेट करेगा, वेंट्रल सरफेस जो होता है दैट इंडिकेट्स द लोअर सरफेस। इसका मतलब ये हो जाएगा। सो थैलस इज डॉर्सीवेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। द लीफी मेंबर्स हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन द टू रोज इन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। मतलब आप लीफ को देखोगे ना, सो दे आर हैविंग लीफ लाइक अपेंडेजेस इन एक्चुअली टू रोज लाइक दिस। ठीक है, तो उस तरीके से टाइनी एंड दैट इट इज वेरी वेरी स्मॉल एंड टाइनी। तो इनको आइडेंटिफाई कर पाना या काउंट कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। So leaf-like appendages around the stem-like structures. Now, asexual reproduction जो होता है liverworts में, that takes place by the fragmentation of thalli. या तो fragmentation के through होगा और by the formation of specialized structures which are called gemi. Gemi मतलब gamma cup की बारे में बात हो रही है. So gemi, they are green multicellular asexual buds which develops in small receptacles. तो gemi का structure देखोगे ना तो कुछ cup-like structure होता है इस तरीके का, इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर रहता है। क्लियर? सो कॉल्ड gamma cups which is located on the thalli, and the gamma become detached from the parent body and it is going to germinate to form the new individuals. तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि जो गेमी होते हैं, गेमी आर बेसिकली detached from their parent body to give rise to a new organism. Now during the process of sexual reproduction, the male and female sex organs, they are usually produced either on the same thallus or on the different thallus. तो हो सकता है कि वो सेम थैलस में भी हो और डिफरेंट थैलस में भी होंगे। तो अगर सेम थैलस में होगा, सेम थैलस में अगर इनका बॉन्ड होगा, so that will be called as monoecious plant और monoecious bryophyte। और अगर डिफरेंट थैलाई में हो जाएगा, so that is called as dioecious। That is called dioecious. ठीक है? Now sporophyte is differentiated into food seta and capsule, and after meiosis the spores are produced within the capsule that germinates to form the free living gametophyte. अब इसको समझाने के लिए मेरे को आपको एक फिगर दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे आप देखोगे। This is the case. However, this is of this is of your liverwort, but still we can see to analyze कि structures किधर किधर कहाँ कहाँ present होते हैं। ठीक है, तो ये part हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं that this is the gametophyte and this one is the sporophyte। ठीक है, ये gametophyte is sporophyte। तो gametophyte वाला जो plant body है ये leaf like appendages को bear किया, मतलब sexually reproductive नहीं है अभी। और जो sporophyte होता है that consists of food seta का पार्ट और एक कैप्सूल का पार्ट, क्योंकि कैप्सूल के पार्ट में ही स्पोर्स बनने होते हैं। ये कैप्सूल के पार्ट में ही हमें स्पोर्स मिलता है। सो फॉर दैट रीजन ओनली दिस कंटेन्स स्पोर्स, द कैप्सूल कंटेन्स स्पोर्स। और ये आपको ब्रांचिंग वाले गैमेटोफाइट की भी बात दिखेगी, विच इज सीन इन केस ऑफ स्फैग्नम। तो स्फैग्नम के केस में ये गैमेटोफाइट जो होता है इट इज यूजुअली ब्रांच्ड टाइप, ब्रांचेस के फॉर्म में दिखेगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो कैटेगरी हो जाएगा वो हो जाएगा मॉसेस। नाउ मॉसेस के केस में जो प्रीडोमिनेंट लाइफ साइकिल होता है मॉसेस में वो गैमेटोफाइट है। और गैमेटोफाइट के दो स्टेजेस हो जाएंगे, एक तो होता है प्रोटोनिमा स्टेज, मॉसेस के केस में मैं बता रही हूँ। सो गैमेटोफाइट इन मॉसेस। So the first one, that means first category of the mosses, it basically includes the protonema stage. And the second category includes the creeping stage, which is also called as leafy stage actually. Leafy stage. Clear? This is the case. So protonema जो होता है ये वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द मॉसेस को इंक्लूड करता है, वाइल लीफी स्टेज जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट को इंक्लूड करेगा। तो इसमें वही चीज है दैट द फर्स्ट स्टेज इज द प्रोटोनिमा स्टेज व्हिच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर एंड इट इज अ क्रिपिंग ग्रीन ब्रांच एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज हो जाएगा। ठीक, बट जब हम लीफी स्टेज की बात करते हैं
तो लीफी स्टेज जो होता है, दिस डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज अ लैटरल बड, मतलब इसका जो ओरिजिन होता है वो यहीं से होता है। लीफी स्टेज जो होता है वो बेसिकली आपका प्रोटोनीमा से ही ओरिजिनेट करता है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा से ओरिजिनेट करता है इन द फॉर्म ऑफ लैटरल बड इटसेल्फ। सो दैट्स व्हाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सिस bearing spirally arranged leaves in them, and they are detached to the soil, they are attached to the soil through multicellular and branched rhizoids. This stage bears the sex organs. तो यही वाला वो जो स्टेज होता है जो कि अल्टीमेटली सेक्स ऑर्गन्स को बेयर करता है, that only bears the sex organ, प्रोटोनीमा में सेक्स ऑर्गन्स नहीं मिलते। ऑलराइट, नाउ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं इसमें ना। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मॉसेस के केस में फ्रैगमेंटेशन एंड बडिंग, ये दो चीजों से होगा, क्योंकि सेकेंडरी प्रोटोनीमा वेजिटेटिव पार्ट है तो इसीलिए फ्रैगमेंटेशन एंड बडिंग के थ्रू होगा इन द सेकेंडरी प्रोटोनीमा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो बनेंगे एंथेरिडिया एंड आर्चिगोनिया, जो कि एपेक्स ऑफ द लीफ शूट में बनेगा। फर्टिलाइजेशन होगा, दैट मींस एंथेरोजोट इज गोइंग टू फ्यूज विद द एग। प्रोसेस ऑफ जो लाइफ साइकिल है ना, दैट विल रिमेन सेम इन ऑल कैटेगरीज ऑफ ब्रायोफाइट, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। Now the zygote is ultimately going to develop into sporophyte, which consists of foot, seta and capsule, जो कि foot, seta and capsule से ये usually बना होता है। Now the sporophyte in mosses is more elaborate than in case of the liverwort. अब सीधी सी बात है, mosses is a higher category than the liverwort, तो उसका sporophyte भी ज्यादा specialized हो जाएगा। Now the capsule contains spores and the spores are formed from the meiosis. कैप्सूल जो होता है वो स्पोर्स का ही कंटेन किया होता है, एंड दिस meiosis is ultimately result into formation of haploid spores in them. So mosses, they have an elaborate mechanism of self or you can say spore dispersal. बहुत ही elaborate mechanism होता है, किसी में elaters यूज होते हैं तो किसी में कुछ थिकनिंग यूज होती है, अलग अलग वेज होता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस इज द केस। तो एग्जांपल्स जो हो जाएगा मॉसेस का वो फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैग्नम हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट हो गया, ये हमारा पार्ट हो गया पूरा कंटेंट ऑफ ब्रायोफाइट का। इसमें एक चीज जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में कि ये जो पहला है ये आपका मर्केंशिया का फिगर है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। दिस इज आर्चिगोनियोफोर इंडिकेट करेगा फीमेल को, एंथेरिडियोफोर इंडिकेट करेगा मेल थैलस को, ठीक है। ऑन द अदर हैंड नीचे अगर आप देखेंगे तो दिस इज योर फ्यूनेरिया, ये फ्यूनेरिया का एग्जाम्पल है। और फ्यूनेरिया में दिस इज यूजुअली मोनोएशियस, तो इसमें बाइसेक्सुअल है तो डेफिनेटली इसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों हो जाएंगे। सो दैट इज द केस, एंड दिस वन व्हिच यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज स्फैग्नम। इसमें लीव्स जो होते हैं वो स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं, सो दैट इज कॉल्ड स्फैग्नम। एंड इसमें दोनों ब्रांचेस हमें मिलेगा, एंथेरिडियल ब्रांच भी मिलता है और आर्चिगोनियल ब्रांच भी मिलेगा। क्लियर? सो दिस इज द केस। सो दिस इज ऑल अबाउट the content part of the second part of your plant kingdom, which is bryophyte. And let us now just take a look into the questions part. एक बार हम वो भी देख लेते हैं। क्या तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, the first question says कि when and where does reduction division takes place in the life cycle of liverwort. तो लाइफ साइकिल ऑफ लिवरवर्ट में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि कैसे जाइगोट बना है। तो जाइगोट का डायरेक्ट जर्मिनेशन होगा स्पोरोफाइट में, स्पोरोफाइट में फिर मियोसिस होगा, तब वो हैप्लॉइड स्पोर बनाता है। तो वही आपको बताना है कि लाइफ साइकिल ऑफ लिवरवर्ट में स्पोरोफाइट में रिडक्शन डिविजन होगा, तभी स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। सो दैट इज द केस। नाउ नेम द 3 ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स दैट बेयर्स आर्चिगोनिया and briefly describe the life cycle of any one of them, आपको ये बताना है। तो 3 जो कि आर्चिगोनिया बेयर करते हैं, तो इनके केस में आपका there is this one एलिगी हो जाएगा, then there is ब्रायोफाइटा हो जाएगा, and then there is your टेरिडोफाइट। ये 3 हो जाएंगे आपके जो कि आर्चिगोनिया को बेयर करते हैं। तो किसी एक का आपको एक्सप्लेन करना है। Now mention the ploidy of the following protonymal cells of a moss: primary endosperm nucleus in dicot, leaf cell of a moss, prothallus of a fern, gamma cell in mercantia, meristematic cell of monocot, ovum of liverwort, and the zygote of fern. Now out of all these characteristics, protonema
हो गया. Then there is leaf cell हो गया. प्रोथैलस जो होता है फॉर्न का, ये आपका गैमेटोफाइट है, तो ये आपका बेसिकली हैप्लॉइड हो जाएगा. दिस इज हैप्लॉइड. गैमा सेल जो होता है ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, तो दिस इज आल्सो डिप्लॉइड. ठीक है, ये वाला पार्ट हो जाएगा. एंड ओवम ऑफ लिवरवर्ट इज हैप्लॉइड, ये हो जाएगा. एंड जाइगोट ऑफ फॉर्न इज डिप्लॉइड. ठीक, तो ऐसे दिमाग लगा के आपको सारी चीजें अंडरस्टैंड करनी हो. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम ब्रायोफाइट का देखेंगे तो इसमें we can just see, यहाँ पे दिया भी हुआ है that you have to explain briefly with suitable examples protonyma. तो protonyma क्या है? protonyma जो है it's the vegetative phase of the ब्रायोफाइट. ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था. ठीक है. सो इसमें आपका जो सेक्स ऑर्गन्स होती है वो यूजुअली लैकिंग हो जाएगी, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है. एंथेरिडियम इज द मेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूसेस एंथेरोजॉइड. आर्चिगोनियम इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूसेस ओवम और सिंगल एग. तो ये आपको ध्यान में रखना है. यहाँ पे लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस के बीच के एग्जाम्पल का डिफरेंस पूछा है, तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि लिवरवर्ट्स जो होंगे they usually have a thyloid type of body, but mosses they have erect prostrate branch like structures. ठीक है, तो उसमें उस पैटर्न में हो जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो लिवरवर्ट्स होता है उसमें मर्कैंशिया जैसे ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं दैट बेयर्स गेमाका. मॉसेस में जब हम देखते हैं फ्यूनेरिया में, तो उसमें स्पोरोफाइट इज डिवाइडेड इनटू फुक्सीटा एंड कैप्सूल. सो ये बेसिक डिफरेंसेस जो हैं ये आप देख करके उसको क्लियर कर सकते हैं. ठीक है. सो ये सारी चीजें हैं. इधर मैच द कॉलम है, दैट विल बी टेकन अप सेपरेटली इन द नेक्स्ट लेक्चर. एंड ये पूरा पार्ट आपका कंप्लीट हो गया ब्रायोफाइट का. सो इन टुडेज लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द कैटेगरीज ऑफ द ब्रायोफाइट. हम लोगों ने कैटेगरीज, बेसिक फीचर्स देखा, लाइफ साइकिल देखा, categories of bryophyte देखा, that means liverwort and hornwort, and along with the discussions of your subjective questions as well. ठीक है. MCQs, that means DPPs आपको डेली मिल रहे होंगे, डेली मिल जा रहे होंगे सारे सेक्शंस के. सो प्लीज डू प्रैक्टिस इट एंड please keep revising it, and do join every day in your, whether you're from the INCEPT batch or whether you're from the emerge batch, so that the practicing of the NEET through your NCERT point of view gets completed from tip to toe. All right, thank you very much.